We are looking into that. What we can have a better, obviously, combination for this test match to win it. So let's see. So, when the last two tests, England have the momentum. So, do you think that they have the upper hand going into the World Cup? Obviously, they have the momentum in their own conditions also. Confident team at the moment, but we believe that we can also just come back from any stage, any position, because now this is a do-or-die test match for us, so we have to really play well. Misbah, you're saying this is a very important test match for you personally. If you were to lose this series, do you think you would consider your position as Pakistan captain? I don't have that sort of fear. Otherwise, I would have retired long ago. I'm always up for challenges and never thought of the results. I believe in just taking the challenges and try hard. And that's what I'm here for. I will just keep trying that, especially throughout this test match. And if Pakistan needs me after that, that's another part. I mean, I will just think about that after this series. But at the moment, that's important for me and for the Pakistan team, how we'll just go about this test match. Do you feel that you need a positive result because of all the hard work and the preparation and whatnot that you put in before this? Yeah, obviously. I mean, looking at the whole series, the way we started, I can just look back in the second test match, okay, England just played really well and knocked us in the second test match, but in the third test match, I believe it was some of our mistakes that just let England come back in that game. Otherwise, the result in the last session, after doing so many mistakes and after doing so much well in different sessions, we were really in the game till the fourth day. Even in the last day, I think, till lunch, it was looking like a draw. So I think the team can do it the way we are playing, and we're really just competing them well. But we need to really combine those performances, which we could not do in the last test match, the way we did in the Lord's test. Yasir Shah took 10 and some of our batters just put up a good show. We need to really combine those efforts to win a test match. Performances are there, here and there, but we are not translating them into a victory. Misbah, the England captain was asked a question about possible ball tampering in the last match, and he said it was so far-fetched that he doesn't want to comment on it, and he just rubbished it. Do you agree with about the ball tampering thing? Because there have been suggestions from somewhere that England reversed the ball by ball tampering. Reverse happen, and sometimes in the last day it happens because the pitch is so dry, and on the fifth day, I mean, if you just go crossing, sometimes it can be the way it happened on Lord's. Obviously, we were also a little bit concerned about that, the way it just happened just after the lunch, because it wasn't doing anything till the fourth day, and suddenly it started like, it just happened throughout the test match. But obviously, fifth day is different, and it could happen, and umpires are there, match referees are there, and we are not, we don't want to really just I mean, especially I'm not there to judge those things. I think they are very good bowlers. They are good side, especially Anderson, Broad. These bowlers know what to do, and especially how to just take care of the ball on a pitch, last day pitch. How to reverse it, especially they can bowl crossing bounces and like that. So obviously there was concern the way it just swung and that all, but nothing ahead, and we're not taking anything ahead of that. Is that a bit of a shame, Misbah, that those rumours go around? Because the series has been played in a very good spirit, you've been building bridges and so on. Is it a bit of a shame that it's a kind of a bit of a talking point in the build-up to the test match? Yeah,
obviously we don't just want to get into those things. I mean, the game is over. I think credit should be given to England team the way they bowled, got us out. That was a super spell by all their bowlers, especially after lunch. So, I mean, that happened, gone. Now we have to focus on the coming game, and we should not just talk about that, what happened, and what we should have played better. I ask about keeping your spirits up. I mean, as you say, I mean, you know, it has been a great series. It was a good last Test match. You played your part, but when you get so near, if you like, to winning, is it more challenging to keep the spirits up? We have to. This is the only way. If you look at after 2010, I mean, we dominated England in our conditions. We won 6 Test matches in a row. We won 5 Test matches there, and then we won the first one here. So we dominated such a good team who were competitive in any conditions. And now they won 2 Test matches in their own conditions. And second Test, I believe that they just outplayed us. But the third one was pretty much competitive, and ups and downs. We were at the top most of the days. So I will not say that we were not competitive. We were there. A bit disappointed that we could not really finish that. We could have done that in the conditions where we were after the 3.5 days. But obviously there are a lot of positives for us. We are playing well, and just already I said that we really need to combine those performances for the team. I mean, if somebody score runs, we just need help from others and also from the bowlers to just stand up and took wickets for us. If we can combine those performances, we could still be on the winning side, we could still be more competitive. Misbah, you said you would continue on as captain. Is that tour of Australia later in the year a bit of carrot for you? Sorry? Is the tour to Australia something that you're looking forward to down the line as captain? Obviously, it's really difficult to just leave the team in these sort of difficult tours, especially for the sake of Pakistan. That's why I'm here in this tough series. I've been looking forward for that, but let's see how it goes. Obviously, that will be a challenge for us in New Zealand and then in Australia. Everybody knows that whenever Pakistan teams or any Asian side goes in Australian conditions, that really is tough to handle. And that's why I just took that challenge and just trying to just plan that also. Because that could be really harsh for someone young, even as a batsman, to just replace me there in Australian conditions, and then obviously it could be a challenge for a young captain or anyone who replaces me. So looking forward for that. Let's see how it goes after this series and how I plan my future. Misbah, have you given serious thought to changing the balance of the side, getting a fifth bowler in, and maybe playing Iftikhar in the middle order? Yeah, obviously these are the talking points. We need to really win this Test match. We really need to do well, and we're looking at every possibility that can just give us a right balance for this Test match, and we are just looking into that. Are all the fast bowlers okay to play back-to-back tests as well, fitness-wise? Yeah, it's difficult, especially we normally play 3 Test matches, and in our own conditions, fast bowlers don't have to bowl much, and especially when you come to these conditions and they have to bowl more than 20 overs every day. Conditions are not easy for them, just running in, especially wind, this weather. It's tough for them to recover also. I mean, after a long time, we are playing 4 Test matches, and there's a lot of workload on these fast bowlers. So that's a bit tough for us, but we have to really deal, especially these fast bowlers need to really step up and just show what they are made of in the last Test match. कितना मुश्किल होगा सीरीज में वापस आना. हम लगातार 2 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, इंग्लैंड हाई पर है, लेकिन ओवरऑल में यूजुअली पाकिस्तान अच्छा करता है. तो किस तरह की तैयारी है और
कितना मुश्किल है? मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, जो हम हमेशा बिलीव जिस चीज़ पे रखते हैं। मैंने पहले भी एक चीज़ कही है कि हम अपने आप को राइट ऑफ नहीं कर सकते। हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हमने पहला टेस्ट मैच बहुत ज़बरदस्त खेला, दूसरा टेस्ट मैच बिल्कुल भी हम लोग बिलो एवरेज थे, लेकिन थर्ड टेस्ट मैच मोस्ट ऑफ द डेज, मोस्ट ऑफ द सेशंस हम कंपेटिटिव थे और हम इंग्लैंड से आगे थे। डिसअपॉइंटमेंट है कि हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके, बट स्टिल आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए, और अगर हम उन एफर्ट्स को, उन परफॉर्मेंसेस को कंबाइन कर सकें इस टेस्ट मैच में, तो स्टिल मेरे ख्याल में हमारे पास गुड चांस। और कुछ ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं कि अगर उनकी तरफ से हमें कंट्रीब्यूशंस आए तो हमारे बहुत चांसेस हैं इस टेस्ट मैच में अच्छा करने के। मिसबा, वनडे क्रिकेट को कहा जाता है कि बैट्समैनों की क्रिकेट है। 4 डे और 5 डे क्रिकेट में इस किस्म के एलिगेशन आते हैं कि बॉल टैम्परिंग, कभी कहते हैं कि बॉल बना लिया। तो आपने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक का आपका इतना तजर्बा, आप समझते हैं कि एक लिमिट तक इस चीज़ को लीगल कर दिया जाए कि बॉलरों को भी थोड़ा सा स्पेस दिया जाए कि ये जो बार बार शिकायतें या इल्ज़ाम आते हैं इनसे छुटकारा मिले? देखिए, ऑब्वियसली जो राइट वेज हैं इसके, जिस तरह आप क्रॉसिंग बॉलिंग करते हैं या बाउंड्री से आप वन बाउंस थ्रो करते हैं, देयर आर लीगल वेज, और आप शाइन करते हैं दूसरी साइड, तो ये लीगल तरीके ही हैं। बॉल को एक तरफ से थोड़ा पुराना करके दूसरी तरफ से आप उसकी केयर करते हैं, उसको शाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से, और जो टीम ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ करती है वो एक्सपर्ट करती है रिवर्स स्विंग को। ये भी मेरे ख्याल में अब एक आर्ट ऑफ साइंस बन गई है, और एज अ होल 11 आपको जो है गेम को देखना होता है और उसकी केयर करनी होती है, तभी मेरे ख्याल में एज ए टीम आप उसको उससे कोई फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमें भी मेरे ख्याल में अब मोर केयरफुली इस चीज़ को देखना चाहिए ताकि हमारे बॉलर्स को भी ये एडवांटेज मिले। लेकिन ये हमारा आर्ट था जो दूसरों के पास चला गया। मुझे याद है इसी ग्राउंड पर 2009 में जब वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उमर गुल ने स्पेल करवाया, तो डेनियल विटोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि मैंने 13वें ओवर में ऐसा रिवर्स स्विंग होते हुए बॉल नहीं देखा। तो हमारे बॉलर अब क्यों ये आर्ट भूले? लेकिन हमें बॉल की केयर करनी होगी, और आजकल जिस तरीके से स्पेशली आपके एक आधा बॉलर ऐसा होता है कि जो ऐसा स्पेल करता है, क्रॉसिंग मोस्टली उसमें बॉलिंग करता है, ताकि गेम की एक साइड को मुसलसल जो है वो आप पिच पे मारने की कोशिश करते हैं, और फिर अदर साइड आप शाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रिवर्स स्विंग मिलता है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड को ये एडवांटेज है कि उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, एंडरसन, ब्रॉड, और वो इन कंडीशंस में खेलते हैं और उनको पता है कि किस तरीके से उन्हें बॉल की लुक आफ्टर ज़्यादा करनी है और किस तरीके से वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे बॉलर्स अभी अगर आप देखें तो बहुत कम क्रिकेट खेले हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ये चीज़ें सीख रहे हैं, बट उनको टाइम लगेगा किस तरीके से बॉल की लुक आफ्टर करनी है, किस तरीके से बॉल को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए इन लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग। तो आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आएंगी और थोड़ा हमें इस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में काफ़ी जो है स्पेशली मेरी तो खैर इस मामले में, लेकिन बैटिंग कोच से और कोच से उनकी काफ़ी डिस्कशन हुई और इज़ वर्किंग हार्ड, कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टिल रहें बॉल को खेलते टाइम, मूवमेंट्स जो ज़्यादा हो रही हैं उस पर काम कर रहे हैं। पिछले टेस्ट से पहले भी अभी भी 2 दिन से वो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जो सीनियर बैट्समैन होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जब आप ऐसी सिचुएशन आती है तो वो इवन यंगर बैट्समैन से ज़्यादा आप प्रेशर फील करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप के पास एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ से निकलने का भी, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ऐसा बैट्समैन किसी भी टाइम उस फेज से निकलेगा तो वो आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच विनिंग इनिंग खेल सकते हैं। और जिस किस्म का उनका पॉजिटिव थिंकिंग होती है, हमेशा से एटीट्यूड होता है, और ही इज़ केपेबल ऑफ दैट,
कि वो कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका की सीरीज़ आपके सामने है, 377 रन्स के चेज, पूरी सीरीज़ में कोई रन नहीं हुए, बट लास्ट इनिंग 177 नॉट आउट, उस स्टेज से ऐसी इनिंग प्रोड्यूस करना, तो ही इज़ केपेबल ऑफ दैट. और इसीलिए मेरे ख्याल में आई थिंक ही कैन. हम हमेशा एक प्लेयर जिस पे आप हमेशा बिलीव कर सकते हो, वो किसी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से किसी भी टाइम कम बैक कर सकते हो, यूनुस खान में, बिकॉज उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमेशा होती है कि मैं कर सकता हूँ, मैं किसी भी टाइम जो है वो ऐसी इनिंग खेल सकता हूँ. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच टीम ऑल्सो बिलीव्स. थैंक यू.